Hello children, welcome back to your maths class. I am Poonam Bagga and we are studying class 10th maths, chapter 7 coordinate geometry. After learning the distance formula, the section formula, the midpoint formula, today in this chapter we are going to learn how to find the area of a triangle when the coordinates of its vertices are given. We know from our previous smaller classes that the area of a triangle is given by the formula half base into altitude, where if we drop a perpendicular from one of its vertices to its opposite side, then this line segment is called the altitude of this triangle, or we say it to be the height of this triangle, this line segment. Also this side on which this perpendicular is being dropped is known as the base of the triangle, and then we know that the area of a triangle is given by half base into altitude. Also in class 9th you have learnt the Heron's formula to find the area of a triangle when the lengths of its sides are given. Suppose the lengths of the sides are A, B and C. Then first we find the semi-perimeter S given by A plus B plus C upon 2, and then we find the area by this expression square root S into S minus A, S minus B, S minus C. This is the Heron's formula to find the area of a triangle when the lengths of its sides are given. Now can we find the area of a triangle when the coordinates of its vertices are given? Here we have the vertices, say A, B and C, and suppose some coordinates have been given in case of these vertices. Can we then find the area? One way is to find the lengths of the sides of the triangle by using the distance formula and then apply the Heron's formula. But this process will be a difficult and tedious work, especially when the lengths of the sides are irrational numbers. So we need some other formula to find the area of a triangle when the coordinates of its vertices are given, and this formula is this expression. The area of a triangle, the coordinates of whose vertices are x1 y1, x2 y2 and x3 y3, is the numerical value of the expression half of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Now this formula looks a little bit difficult. Let us first see how we get this formula, and then we will learn how to apply this formula. We will make it easy for you. Okay, let us now derive this formula. Here we have one triangle ABC. Let ABC be any triangle whose vertices are A, x1, y1. Let the coordinates of B be x2, y2 and the coordinates of point C be x3, y3. Now we need to find the area of this triangle. Let us first drop some perpendiculars. Let us drop perpendicular from point B on this x-axis, one perpendicular from point A on this x-axis and one more perpendicular from point C on this x-axis. Let us name these points as P, Q and R. We write here, draw AP, BQ and CR perpendicular to x-axis. We have done this construction work. Now we want to find the area of the triangle, but here you can see this is a trapezium here. Why is this a trapezium? This quadrilateral ABQP. Why is this a trapezium? We know that in a trapezium one pair of opposite sides is parallel, and here also this BQ is parallel to AP. You can see both these lines are perpendiculars to the x-axis, and so these two line segments are parallel, and so this is a trapezium, this one ABQP. Similarly, just look at this figure. Isn't it also a trapezium? Yes, again this figure APRC, it is a trapezium because again these perpendicular lines AP and CR are parallel, and so one pair of opposite sides is parallel, and so this is a trapezium. Similarly, if you look at this figure, is this not a trapezium? Yes, it is again a trapezium. Here you can see BQ and CR, these two are again perpendiculars to the x-axis, and so these two are parallel line segments, and so we can say that BQRC is a trapezium.
Now if we want to find the area of this triangle ABC, we can add up the area of this trapezium ABQP, first one that I had shaded. Then we can add the area of this trapezium APRC, this second one. We can add both the areas of the two trapeziums, and then we can subtract the area of this shaded trapezium BQRC. Then we will get the area of the triangle ABC. We write it here. Clearly ABQP, APRC and BQRC are all trapezia, and then the area of the triangle ABC will be given by area of trapezium ABQP plus area of trapezium APRC minus area of trapezium BQRC. बात समझ में आ रही है? पहले हम इस फर्स्ट एरिया को ऐड अप करेंगे इस एरिया से, और फिर ये शेडेड एरिया माइनस करेंगे. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम? यू नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम is given by the formula, just recall it, half into sum of parallel sides into the distance between them. This is the area of a trapezium. We know this from our previous smaller classes. Now let us find the area of trapezium ABQP. Area of triangle ABC is equal to, first we find the area of trapezium ABQP. It will be half into sum of parallel sides. Just have a look in case of ABQP. The parallel sides are BQ and AP. So we can write here AP plus BQ. And the distance between them, it is QP. So we can write here into QP. Plus again we have this second one, trapezium APRC. Let us have a look. APRC. इसके केस में पैरेलल साइड्स हो गई आपकी AP and CR. So we write here AP plus CR into the distance between them. The distance is this one, PR. So we write here PR. Plus again here now we have to subtract, not add. Now we have to subtract the area of the third trapezium. So we write here a minus half into sum of parallel sides. Now we will take up this trapezium BQRC. तो parallel sides कौन सी है? यहाँ से BQ और यहाँ से CR. So we write here BQ plus CR into the distance between the two sides, it is QR. So we write here QR. I hope it is clear. All this I am doing just for your understanding. Now just have a look. AP and BQ. We need to add these two line segments AP and BQ. How to get this line AP? देखिए आप, ये point A का जो y coordinate है y1, ये उतनी ही तो length हो गई AP. It is the y coordinate of this point A. If you drop a perpendicular here, you will get y1. तो ये height जो हो गई यहाँ पर AP, ये हो गई y1, और इसी तरह से BQ, it is the length y2 जो कि y coordinate है point B का. So it is y1 plus y2. Here we write half into y1 plus y2. And what is this distance QP? This full length from O to P, it is nothing but x1 जो कि है x coordinate point A का. So this length is x1. Now what is this length? This length is nothing but the x coordinate of point B, that is x2. Now we need to find this length QP. What will it be? Yes, it will be x1 minus x2. इस पूरी लेंथ x1 में से ये x2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी लेंथ x1 minus x2, and this is what we have to write here in this case into x1 minus x2. Plus again here we have half. Similarly we can write AP plus CR. AP is nothing but y1 and CR is nothing but y coordinate of point C. So we have y1 plus y3. Again we need to find this PR. For this just have a look PR. यहाँ तक की लेंथ आपकी हो गई x3 और यहाँ तक की लेंथ हो गई आपकी x1.
तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका x3 माइनस x1 एंड सो वी राइट हियर x3 minus x1. Then we subtract the area, the third one, half into BQ plus CR. What is BQ? Just have a look. This is the length y2. And what is CR? This is the length y3. So we write here y2 plus y3 into QR. Now this length QR, ये हो जाएगी आपकी OR minus OQ. और OR is the x coordinate of point C, that is x3 and this is x2. So it will be x3 minus x2. So in this way we have added the area of the first trapezium and the second trapezium and then subtracted the area of the third trapezium. Now if you take out 1 by 2 as the common factor out, you will get this expression, and then on simplifying and cancelling the like terms like x1 y1 minus x1 y1, then we have minus x2 y2 and here we have plus x2 y2, cancel it, then minus x3 y3 and here we have plus x3 y3. On simplifying and taking the like terms together with coordinates x1 x1 and x2 x2 together, x3 x3 together, we get this expression which is the area of a triangle. Now we learn how to write down this formula, how to learn this and remember it and apply it. We will learn it. We have one triangle with coordinates x1 y1, x2 y2 and x3 y3, and now the area of a triangle, it is the numerical value of the expression. Let us try to write it. First we take it half और उसके बाद जो ब्रैकेट है उसके अंदर हमें क्या लेना है, पहले x और फिर y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई अगेन प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, ये पहले लिख लीजिए. फिर पहला x होगा आपका x1, दूसरा x आपका होगा x2 और थर्ड x आपका होगा x3. Now how to number these y's? We take the numbers 1, 2 and 3 in a cyclic order. पहले हम 1 लेंगे, 1 के बाद हम 2 लेंगे, 2 के बाद हम 3 लेंगे और 3 के बाद वापस हम 1 पर चले जाएंगे. तो यहाँ पर आप देखिए 1 तो है ही, 1 के बाद क्या आना चाहिए, 2. So here we will have y2. फिर 2 के बाद क्या आएगा, 3. So we write here 3. So x1 into y2 minus y3. अब यहाँ पर x2 हमने ले ही लिया है, 2 के बाद क्या आना चाहिए, देखिए 3. तो यहाँ आएगा 3, 3 के बाद वापस से 1, तो ये लेंगे 1. इसी तरह से अब यहाँ x3 हमारे पास है ही और इसके बाद 3 के बाद क्या नंबर आएगा, 1. सो वी राइट हियर 1. देन आफ्टर 1 वी हैव 2. सो इन दिस वे वी कैन राइट डाउन दिस फॉर्मूला. लेट अस राइट इट वंस अगेन just for your understanding. It will be half, then x1 into y minus y I write here, plus x2 into y minus y plus x3 into y minus y. Okay. After 1 what number will come? 1 के बाद आएगा आपका 2. So here we have 2. After 2 we will have 3. So we write here 3. Here again we have 2. So 2 के बाद we have 3. After 3 again we have 1. So we write here 1. After 3 1 and after 1 we have 2. In this way we get this expression. Is it clear to you or not? I hope it is clear, and now as you will do questions one by one, this will be very much learned to you and you will be able to write it directly also. Now focus on this word numerical value. What does this mean? Numerical value से क्या मतलब है? We will come to it after taking one example. Let us take example number 11 from your book. Here it is. Find the area of a triangle whose vertices are these 3 vertices have been given, and we have drawn this triangle for you. Just have a look. We have 1 minus 1 here, this point, minus 4 6 it is this point, and minus 3 minus 5 it is this point. और इन पॉइंट्स को अब जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये ट्राइंगल हमें दिख रहा है. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. Let us take it as x1 y1. The first vertex we are taking the coordinates as x1 y1. Then we take it as x2 y2 and let us take it as x3 y3. Now area of triangle. This will be equal to half into, let us write the formula once again, x1 into y2 minus y3 plus x2
into y3 minus y1. Just remember the cycle, 1 then 2 then 3 then again 1. Just remember this cycle. ये cycle अगर आपको याद होगी तो आप easily ये लिख सकेंगे formula. Then x3 into y1 minus y2. Now place in these values here. This will be equal to half into x1. It is 1. 1 into 6 and minus 5. ठीक है, प्लस x2 आपका हो गया -4. देन वी हैव y3 विच इज -5 माइनस दिस y1 विच इज -1 प्लस देन x3 इट इज -3 एंड देन वी विल टेक -1 -6. यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए. और कोऑर्डिनेट्स को लिखते समय भी ध्यान रखिएगा. जैसे यहाँ पर 2 बार माइनस आएगा, एक माइनस तो फॉर्मूले का आ रहा है और एक माइनस इस कोऑर्डिनेट का अपने आप ही है. सो नाउ जस्ट सिंप्लीफाई 1/2. दिस विल बी 1 into 6 + 5 हो जाएगा, ये 6 + 5. देन प्लस -4. दिस विल बी -5 + 1. Plus here -3 and this will be -7. -1 -6 is -7. Again on simplifying, let me take a little bit upwards so that you are able to see it properly. This will be now 6 + 5. 11 into 1 will be 11 plus here -4 into -5 + 1 is -4 again, and here we will have plus 3 7s are 21. Minus will become plus. This will again be equal to half into 11 plus here 4 4s are 16 plus 21. On adding these three numbers, you will get it as 6, 7 and 8. Then we have 2, 3, 4. 48 upon 2, that is 24. 24 square units is the area of this triangle. I hope it is very much clear to you. Let me change the color of the pen. Now, here we have taken this pair of coordinates as x1, y1. Here we had taken this set of coordinates as x2, y2 और इस पेयर को हमने लिया था x3, y3 और तब हमने जब एरिया निकाला तो हमें मिल रहा है 24 square units. Now let us take this set of coordinates as x2, y2 and this set of coordinates as x3, y3. यहाँ पर हम इसको तो x3, y3 लेते हैं. अब नेक्स्ट बार एक बार फिर से इसका एरिया निकालते हैं और इसको हम x2, y2 कंसिडर करते हैं. लेट अस डू इट. अगेन वी आर डूइंग एग्जाम्पल 11 एंड नाउ दिस टाइम व्हाट आई एम डूइंग इज लेट दिस बी x1, y1, दिस बी x2, y2 एंड दिस बी x3, y3. अगेन लेट अस फाइंड द एरिया नाउ. एरिया ऑफ ट्राइंगल, what will it be? Let us see what we get. Something interesting we will be having. Half into, let me write the formula once again, x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. ठीक है, अब इसमें प्लेस करते हैं वैल्यूज़ को. हाफ इंटू x1 इट इज़ 1, वी हैव टेकन इट 1. देन y2 minus y3. y2 अब हम ये ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, -5 -6. ठीक है, देन प्लस x2 वी आर टेकिंग नाउ एज -3 एंड देन वी विल टेक y3 minus y1. y3 is 6 this time and y1 is -1. Then plus x3 we are taking it as here -4 and then y1 minus y2. y1 we are taking as -1 and then minus y2 which will be -5. सब कुछ सेम कर रहे हैं, बस यहाँ क्या चेंज किया है हमने, इनकी पोजीशन बदल दी है. इस पॉइंट को पहले हमने x3 y3 लिया था, अब हम ले रहे हैं x2 y2 और इस पॉइंट को हमने कंसिडर किया था x2 y2 और अब हम इसी को कंसिडर कर रहे हैं x3 y3 और इससे हम देख रहे हैं कि एरिया क्या निकल कर आ रहा है. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई. हाफ इंटू -5 -6, it will be -11 into 1, that is -11. Here we will have -3 and here 6 plus 1 will be there, so we write 7 here directly plus here -4 into we will have -1 plus 5. Again on simplifying we will get it half into -11.
then this will be minus 21 and this will be 4 into minus 4, that is minus 16. Now what do you see? On adding these numbers you will get it as minus 48 upon 2 and this time it is coming equal to minus 24. अभी हमने जब एरिया निकाला था तब तो आ रहा था 24 स्क्वायर यूनिट्स और अब कितना आ रहा है? इट इज़ कमिंग आउट इक्वल टू माइनस 24. और हमने क्या किया? बस यहाँ पर ये जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी हैव इंटरचेंज्ड. पहले हम इसे x2y2 और इसे x3y3 ले रहे थे और अब हमने इसे x2y2 और इसे x3y3 लिया है. पर उससे आप देखेंगे साइन में डिफरेंस आ रहा है. ये जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो तो सेम आ रही है 24 और 24, पर ये साइन डिफरेंट आ रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप जब ये फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको हम एडअप कर रहे हैं. इट इज़ द समेशन ऑफ सम डिफरेंसेस. और कई बार कोऑर्डिनेट्स के साइन इस तरह से हो जाते हैं कि हमें यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है. और ऐसे केस में क्योंकि एरिया एक क्वांटिटी है, एक मेजर है, वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे और सिर्फ यहाँ लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू. और इसीलिए जब लिखा था वी विल टेक द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. सो हियर वी कैन राइट सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, we take area to be 24 square units. तो यहाँ पर जो हमने ये सॉल्व किया है ये बिल्कुल सही है. बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि हमें नेगेटिव वैल्यू के केस में सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड को लेना है 24 स्क्वायर यूनिट्स, साइन को इग्नोर करना है. और यहाँ से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. दिस आई होप you have learnt very well up till now, and since the area is a measure it cannot be negative, and so we take the numerical value. I hope it is clear to you. Now we have some major points related to this formula. The first one is if the area of a triangle is 0 square units then its vertices will be collinear. What does this mean? अगर एरिया ट्राइंगल का 0 स्क्वायर यूनिट्स है, अब ये 0 कब होगा? ट्राइंगल के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए. अगर हम 3 पॉइंट्स लें तो आप देखेंगे कि हर हाल में यहाँ पर ट्राइंगल मिल रहा है हमें. बस तभी हमें एक एरिया नहीं मिलेगा या कह लीजिए एक ट्राइंगल नहीं मिलेगा जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाए. ये पॉइंट ए ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी. अब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ गए. अब आप ट्राइंगल बना के दिखाइए. बना सकते हैं क्या? आप कैसे भी जॉइन कर लीजिए, ट्राइंगल तो नहीं बनेगा. You join it here, you join it here, you join these two. In any way the triangle will not be formed. और जब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया क्या होना चाहिए? Obviously it will be 0 square units. And so what is being said here? If the area of a triangle is 0 square units, then its vertices will be collinear. यानी एक ही लाइन में lie करेंगे. और आप देख रहे हैं कि एक ही लाइन में है और ऐसे ही पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स. यहाँ पर आप रिकॉल कीजिए कि हमने जब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि कैसे चेक करते हैं कि 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या नहीं. उसमें हमने पढ़ा था कि अगर 3 पॉइंट्स हैं A, B और C और अगर 2 डिस्टेंसेस का सम इक्वल आ रहा है, यहाँ पे हम लेंगे BC, 2 डिस्टेंसेस का सम इक्वल आ रहा है थर्ड डिस्टेंस के, फर्स्ट डिस्टेंस प्लस सेकेंड डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस कंप्लीट थर्ड डिस्टेंस, तो ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर कहलाते हैं. तो ऐसे केस में हम 3 पॉइंट्स की कॉलिनियरिटी चेक कर रहे थे डिस्टेंस फॉर्मूला से. अब यहाँ हम 3 पॉइंट्स की कॉलिनियरिटी को चेक कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. एरिया निकालेंगे तीनों पॉइंट्स को लेकर. अगर एरिया 0 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि एरिया 0 है, इसलिए तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो फिर एरिया कैसा? जब ट्राइंगल बनता है तो हमें एरिया मिलता है, जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, तो एरिया 0 हो गया और तब हम कहते हैं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. तो जब भी आपका क्वेश्चन आए कि चेक द कोलिनियरिटी ऑफ दीज 3 गिवन पॉइंट्स, तो आप चाहे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यूज़ कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला. एरिया निकालिए तीनों पॉइंट से जो बन रहा है और अगर वो 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं. ठीक है. कन्वर्सली इसका रिवर्स क्या कह रहा है?
If 3 points A, B and C are collinear, then the area of triangle will be 0. इसी का रिवर्स है कि 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर हैं, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं इस तरह से, तो जो ट्राइंगल बन रहा है तीनों पॉइंट से उसका एरिया हो जाएगा इक्वल टू 0. क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में हैं तो ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा है, तो इसलिए एरिया अपने आप ही 0 होगा. और जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पॉलीगन. We divide it into triangular regions which have no common area and then add up the areas of these regions. Now here we will be using this formula, and how to use it. If we have one polygon, say a quadrilateral, और इसके जो vertices हैं उनके कुछ coordinates हमें दिए हैं, ऐसे केस में quadrilateral का एरिया कैसे निकालेंगे. आप इसको ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लीजिए. कैसे बनेगा ट्राइंगल, एक कोई भी डायगोनल को ज्वाइन कर लीजिए. तो अब अपने आप ही यहाँ पर देखिए आप दो ट्राइंगल्स बन गए. अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए पहले दोनों ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया निकालेंगे और फिर एड अप कर लीजिए, तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा. इसी तरह से कोई और पॉलीगन भी हो, सपोज वी हैव 5 साइडेड polygon which we say a pentagon, or say a 6 sided polygon which we say a hexagon. Suppose we have a pentagon. In this case also we can divide it into triangular parts. Here we are having 3 triangles. Then find the area of each triangular region and then add up the area of the 3 regions, and then you will get the area of the pentagon here in this figure. तो इस तरह से किसी भी पॉलीगन का आप एरिया निकाल सकते हैं, उसे डिवाइड करके ट्रायंगुलर रीजन्स में, और फिर उनका एरिया फाइंड आउट करके ऐड अप करके आपको पूरे पॉलीगन का एरिया मिल जाएगा. क्लियर? नाउ वी मूव अप टू सम अदर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर बुक. दिस इज एग्जाम्पल 12 फ्रॉम योर बुक. Find the area of a triangle formed by the points A, B and C, and we have been given the coordinates. सिंपल है, ट्राइंगल का एरिया जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है. सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. Let us assume this to be x1, y1, this be x2, y2 and this be x3, y3. Then area of triangle ABC here, it will be given by the formula half x1 into y2 minus y3. यहाँ ध्यान रखिएगा साइकिल को, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और आप इजीली ये फॉर्मूला लिख सकेंगे. देन x2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, सो y3 माइनस y1 प्लस अब हम x3 से स्टार्ट करेंगे, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2. इन दिस वे वी राइट द फॉर्मूला. यहाँ पर x1 रहेगा, यहाँ x2 और यहाँ x3. तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता चल रहा है, और उसके बाद हमें सीक्वेंस पता है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद वापस से 1. नाउ वी विल put in these coordinates. This will be half, then x1 5 into यहाँ से लेंगे 7 माइनस माइनस 4. तो आप डायरेक्टली भी +4 लिख सकते हैं, +4. ठीक है, कैसे लिख रहे हैं हम? यहाँ से जब हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लेंगे तो 7 माइनस माइनस 4 लिखना है, और इसी को डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ 7 + 4. ठीक है, तो आप भी ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं. देन हियर वी हैव प्लस x2, देखिए 4 into y3 which is -4 minus y1 which is 2, so -4 minus 2. देन प्लस x3 आपका हो गया 7, और यहाँ से लेंगे y1 minus y2, this is 2 minus 7. I hope you are able to apply this formula. This is now equal to half into 7 plus 4, it is 11. 11 into 5 is 55. ठीक है, plus here we will have 4 into -6, and here plus 7 into 2 minus 7 will be -5. Now this will be equal to half 55 minus 24 here and minus 35 here. This will be equal to half into 55 minus, we will add these two numbers, here we will have 59. This will be equal to -4 upon 2 equal to -2. Now will the area be -2 square units?
No, here we are getting a negative value, so we will ignore this minus sign and we will take only the numerical value. इसका magnitude ही लेंगे और numerical value लेंगे जो कि है 2. So here we can write, since the area cannot be negative, we take area of triangle ABC equal to 2 square units. Okay, I hope it is clear. We have one more example. This is example number 13 from your book. Find the area of the triangle formed by the points P, Q and R this time. So again we begin the solution. We write the formula. Area of triangle PQR. This will be given by half into x1 y2 minus y3 प्लस, अब कौन सा वैल्यू आएगी x की, x2 और 2 के बाद हम लेंगे 3 और फिर हम लेंगे 1. ठीक है, देन प्लस हियर वी हैव 3 with x, so x3 and then we will have y1 minus y2. 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2. I hope it is clear. Now we simply need to put in these coordinates. अब यहाँ पर मैं x1 y1 x2 y2 शो नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली देखते हैं आप कर पा रहे हैं कि नहीं. We write it here as half into x1. ये हो जाएगा आपका -1.5 into -2 -4 प्लस देन x2 विच इज 6 और उसके बाद साइकिल तो यूं ही चलनी है 1 2 3 फिर वापस से 1, तो वही साइकिल यहाँ पर चलाते रहिए आप. यहाँ से 6 लिया है तो अगला नंबर हो जाएगा 4 और फिर अगला नंबर यहाँ से आ जाएगा -3 करेंगे. यहाँ पर 3 है और फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे तो 4 - 3 प्लस नाउ x3. अब ये लेंगे -3 और अब यहाँ से वापस साइकिल यहाँ पीछे आएगी 3 minus of -2, so we will write it directly as 3 plus 2. बात समझ में आ रही है? पहला नंबर लिया और उसके बाद बाकी दोनों y कोऑर्डिनेट्स लिए, फिर ये दूसरा नंबर लिया x का और फिर वापस यहाँ से 4 और साइकिल को वापस पीछे ले गए 3 आ गया. फिर हमने थर्ड कोऑर्डिनेट लिया ये x वाला और फिर इसके बाद वापस यहाँ पीछे से 3 minus of -2 which will be 3 plus 2. Now half into this will be -1.5 into -6 plus 6 into 1, this will be 4 - 3 is 1 plus here -3 into 3 plus 2 which will be 5. Again we will get half. Now 1.5 into 6, 15 6 90 होता है और आप पॉइंट लगाएंगे तो ये 9.0 हो जाएगा. ठीक है ना, 15 6 90 लिख लिया. अब 1.5 है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले आप डेसिमल लगाएंगे, ये हो जाएगा 9.0. पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो 9 ही लेंगे और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो वी विल हैव 9 ओनली. देन हियर 6 1s are 6 and here -3 5s are 15. This will be equal to half. Then 9 plus 6 is 15 and again -15. This is turning out to be equal to 0 and here we are getting the area to be 0 square units. And just now we discussed what is the meaning of getting the area of a triangle as 0 square units. देखिए आप इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया 0 है, इसका मतलब कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा. एरिया 0 है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं, P, Q और R, और तभी जब हम इन्हें मिलाएंगे तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा और एरिया 0 आ रहा है. और ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में लाई करें उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. सो वी राइट हियर फर्दर since the area of the triangle formed by these points is 0, the 3 points
must be collinear points. ये यहाँ पर रिमार्क आएगा कि क्योंकि एरिया 0 है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट वी टेक वन मोर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 14. फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the points A, B and C are collinear. This time the points have been given to be collinear itself in the question, and now we have to find this unknown value which is k here. तो क्योंकि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर क्वेश्चन में ही दिए हैं, इसका मतलब इन तीनों पॉइंट्स से जो एक ट्राइंगल बनना चाहिए उसका एरिया हो जाएगा 0 और उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. वी राइट द सॉल्यूशन. सिंस द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, the area of the triangle formed by them must be 0. This implies that area of triangle ABC is equal to 0. समझ में आ रही है आपको बात? Since the given points are collinear, the area of the triangle formed by them must be 0. क्योंकि वो तीनों एक ही लाइन में हैं तो एरिया 0 होगा. और इसका मतलब now we have to apply the formula. The formula says half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. This is equal to 0. Now place in the values of the coordinates. This will be half into what is x1 now? This is 2. और 2 यहाँ से हमने ये पहली वैल्यू ले ली है तो बाकी दोनों के y कोऑर्डिनेट्स लेंगे. जिसका x ले रहे हैं तो उससे बाकी दोनों जो पॉइंट्स हैं उनके y कोऑर्डिनेट लेंगे. और किस साइकिल में? इस तरह से. ठीक है ना? 1 2 3 वापस से 1. तो वही काम हम क्या कर रहे हैं, ये पहली वैल्यू ले ली तो y अब हम लेंगे ये k और -3. So k -3 will be k plus 3. I am writing it directly. Then plus अब हम ले रहे हैं ये वैल्यू, इसको रिमूव कर दूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. अब हम ले रहे हैं ये वैल्यू 4. तो क्योंकि 4 ले रहे हैं तो इसका y कोऑर्डिनेट नहीं लेना है, अगले दो के y कोऑर्डिनेट लेने हैं इस सीक्वेंस में. यहाँ पर अगर आप ये पॉइंट लगा लें 6 -3 मान लीजिए तो ये ले लिया x कोऑर्डिनेट और अब y कोऑर्डिनेट लेंगे हम इस साइकिल में. ठीक है, तो यहाँ से -3 और यहाँ से 3. सो वी विल हैव हियर 4 into -3 देन अगेन -3 प्लस अब हम यहाँ से ले रहे हैं ये थर्ड x कोऑर्डिनेट जो कि है 6 और अब बाकी दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स लेंगे और इस साइकिल में 3 minus k. All this is equal to 0. I hope you are connecting yourself with it and you are able to understand. Now what next? Simplify. This will be half into, open up the bracket, it will be 2k plus 2 3s are 6. Here we have -3 it will be -6 and -6 into 4 it will be -24. Then here again we cannot solve this one, so 6 3s are 18 and -6k again equal to 0. Here we see 2k minus 6k. ये like terms हैं 2k और -6k. 2 minus 6 is -4 and with it we have k. Then solve this center part. 18 plus 6 it is 24 and 24 minus 24 it is 0 in fact. All this is again equal to 0. This implies that -4k upon 2 is equal to 0. This further implies -2k is equal to 0. This further implies k is equal to 0 because if we take -2 to the RHS in the division part again it will be 0. तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल रही है equal to 0 और यही तो हमसे पूछा था कि find the value of k. तो हमने यहाँ k की वैल्यू बता दी है. आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं. आप चाहें तो k की वैल्यू यहाँ 0 रखिए और फिर से एरिया निकालिए इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का
और आप देखिए कि एरिया 0 आ रहा है नहीं, तो आप देखेंगे कि एरिया 0 आएगा तब तो हमारी वैल्यू k की सही है, क्योंकि तब हमारे तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे. लेट मी जस्ट सिलेक्ट द राइट ऑप्शन. तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे. तो जब हम यहाँ पर k की वैल्यू जो आई है वो रख के चेक करेंगे कि एरिया कितना आ रहा है. 0 आ गया तो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, हमारा आंसर सही है. और 0 नहीं आ रहा है एरिया, तो हमारा आंसर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में ही तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर दिए हैं. तो ये मैं आप पर छोड़ती हूँ. यहाँ पर k की जगह आप 0 रख के देखिए, एरिया फाइंड आउट कीजिए और पता लगाइए कि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या नहीं. दिस आई लीव अप टू यू. नेक्स्ट वी हैव वन मोर एग्जाम्पल. Example 15. If point A, B, C and D are the vertices of a quadrilateral, find the area of the quadrilateral A, B, C, D. अब यहाँ पर एक quadrilateral की बात हो रही है और उसमें होती हैं 4 sides. Let this be the quadrilateral. Okay, let me name as A, B, C and D. The coordinates of A have been given to be -5, 7. Then B is -4, -5. C is given to be -1, -6 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5. अब हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है. तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर 2 डायगोनल्स बन सकते हैं. 2 डायगोनल्स में से कोई सा भी एक डायगोनल आप ज्वाइन कर लीजिए. बताइए कौन सा करें. लेट अस ज्वाइन BD. तो अब ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगुलर रीजन्स में डिवाइड हो गया. 2 ट्रायंगल्स हो गए यहाँ पर, फर्स्ट वन एंड देन द सेकेंड वन. दोनों ही ट्रायंगल्स का एरिया हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट वी हैव लर्नड जस्ट नाउ. और जब दोनों एरिया निकल जाएंगे देन एड अप द 2 एरियाज एंड देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी प्रोसीड हियर. द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर द गिवन वन A, B, C and D. On joining the diagonal BD, here we are joining the diagonal BD, we get 2 triangular regions. Now first we will find the area of this triangle. Let this triangle be taken first. ABD. We find the area. Area of triangle ABD. This will be given by half into, देखिए आप A है ये वाला पॉइंट, B और D. x1 y1, x2 y2, x3 y3. कैसे चलेंगे. पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इट विल बी -5 और फिर बाकी दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम, उनका डिफरेंस, और इस तरह से साइकिल चलानी है हमें. तो पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है -5 और अब यहाँ से लेंगे हम -5 और ये 5, तो इनका डिफरेंस हो गया -5 -5. ठीक है, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट वी टेक द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकेंड पॉइंट और वो है -4. सो वी राइट हियर -4. और अब फिर से हम y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे. और कौन से y कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसको छोड़ के बाकी 2, और साइकिल इस तरह से चलेगी. ठीक है, 5 -7. सो वी विल हैव 5 -7 प्लस देन द थर्ड कोऑर्डिनेट इट विल बी दिस वन 4. और अब हमें बाकी 2 पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स लेने हैं. 7 माइनस ऑफ -5. 7 माइनस ऑफ -5. In this way we have written these values. Now solve it. It will be half into -5 into -5 will be -10. Then plus -4 into 5 minus 7 it will be -2 plus 4 into 7 plus 5 it will be 12. Now half into this will be -5 into -10 that is 50. माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया. यहाँ पे हो जाएगा आपका नंबर 8. -4 into -2 it's +8 and then plus 12 4s are it's 48. Add up the 3 numbers 8 and 8 it's 16. 1 carried it will be 106 upon 2. This comes out to be 53 square units. This is the area only of this triangle ABD. Now we need to find the area of triangle BCD. ये second वाला. So we find here area of triangle BCD. Area of triangle BCD. हाफ इंटू, देखिए आप ये है पॉइंट B, ये C और D. अब पहले हम यही नंबर लेंगे -4
और अब y कोऑर्डिनेट्स बाकी दोनों के लेंगे, यहाँ से -6 और ये हो गया -5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, -6 -5 प्लस अब हम लेंगे x कोऑर्डिनेट इस सेकेंड पॉइंट का जो है -1 और अब रिमेनिंग पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो 5 minus of -5 we write 5 plus 5 directly. और अब थर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इट विल बी 4 itself और अब बाकी दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स -5 minus of -6, so it will be -5 plus 6. I hope it is clear. You are understanding it very well. Half into this will be -4 into this will be -11 plus this will be -1, this will be 10 plus 4 into 6 minus 5, it's 1. Again on solving, half into this will be 44 minus 10 plus 4. So it will come out to be 44 plus 4, 48 minus 10, it will be 38 upon 2, that is 19 square units. Okay. Now we can find the area of the quadrilateral ABCD. How to find it? Add up the area of triangle ABD and the area of triangle BCD. We write it here. Area of quadrilateral ABCD will be equal to area of triangle ABD plus the area of triangle BCD. This is equal to 53 square units and this is equal to 19 square units. Add up the two, 9 and 3, it's 12, 1 carat 72 square units. इस तरह से हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है पूरे क्वाड्रिलेटरल का. ये देखिए, पहले हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया जो कि हमें मिला 53 स्क्वायर यूनिट्स. फिर हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला 19 स्क्वायर यूनिट्स और दोनों को ऐड करने से टोटल एरिया आ गया 72 स्क्वायर यूनिट्स. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ आफ्टर दिस वी शुड रिवाइज दिस चैप्टर. लेट अस समराइज दिस चैप्टर. The chapter is coordinate geometry and the basic formulas are the distance formula, the section formula. Then if we take a special case where the ratio of the two parts of a line segment is 1:1, then we get the midpoint formula and then we have learnt the area of triangle today. What is the distance formula? If we take 2 points with coordinates x1, y1 and x2, y2, then square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then what is the section formula? It gives us the coordinates of the point of division of a line segment, the coordinates of whose end points are known. ये है end points इस line segment के. इसके coordinates अगर हम x1 y1 लें A के और B के coordinates अगर हम लें x2 y2 और ये point P जिसके coordinates हम मान रहे हैं x y, ये इस लाइन सेगमेंट AB को m1:m2 में डिवाइड करें तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे इस एक्सप्रेशन से. दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2. Then we learnt the midpoint formula, which is a special case of section formula. What we see here? Here the point P is lying in the mid place of this line segment AB. और अगर A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 तो ये जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. This is the midpoint formula, an important one. And then we learnt the area of a triangle today, which is given by this expression where the coordinates of its vertices are given as x1 y1, x2 y2, x3 y3, and this is the area of a triangle. And remember, here we will be taking only the numerical value, ignoring the negative sign if it appears in any case. Okay, so I hope today as we learned the area of a triangle, we did some examples and now we have summarized this chapter. All this is very much clear to you. In our next video, we will take up exercise 7.3 and before I take it, I expect all of you to do those questions once on your own. And so, best of luck. Goodbye.